evening, everybody, and welcome to the wonderful session of MaxNyan Sports Gurukul Unseen Sports Personalities. So, myself, Vaishali Bide Barve from MaxNyan Advisory Private Limited, and along with me, we have. Good evening, all. This is Advocate Rupali Thakur. So, MaxNyan's mission is to develop sportsmanship mindset amongst youth and to create healthy, wealthy globe. And that is the reason we are on our vision and mission of developing the sportsmanship amongst youth and how we can make them healthy, wealthy, fit with mind as well as physically. Again, sports counseling and mentoring and career identifications are the core competencies and USPs of MaxNyan Advisory Private Limited. So on the same grounds, we've been taking continuously for the past so many weeks. So I think, Rupali, we have completed around 8 months now with these different sessions with different eminent speakers, guest speakers from the field of sports. And today as well, we have a wonderful personality with us and who himself is a doctor. And it's our pleasure to invite Dr. Rahul Modi. He's a top orthopedic surgeon who graduated top in class. And he's a distinction holder in MS Orthopedic and stood fourth at the Maharashtra State University of Health Sciences. He has more than 6 years of experience in arthroscopy, trauma, arthroplasty, adult and pediatric reconstruction, bone and joint infection. And well, part is that he holds a diploma in football medicine from FIFA diploma in football medicine. So he has a specialization in arthroscopy fellowship certificate in orthopedic sports medicine. So we have an eminent speaker today with us. His biodata is so long that this session would go on and on if I keep on talking about him. So rather me saying anything, it would be a pleasure to listen to Doctor about his experiences. And of course, today we are more going to talk on what is how do we develop sports injuries, how we can avoid them, as well what are the ways and means of identifying which sport that a student should play. So without wasting too much of time now, I would like to now invite Dr. Rahul Modi on this Unseen Sports Personalities platform. So good evening, Doctor, and welcome to MaxNyan Sports Gurukul Unseen Sports Personalities series. So it's a pleasure to have you, Doctor, here today. And yes, same here. Thank you. And Good evening. Before we go ahead, Doctor, we would definitely like to know, because you are a football lover yourself. So we would definitely like to know about your interest in sports and then how you finally, because MBBS and sports are two different fields, vast fields, and equally need focus. So please, over to you, Doctor, now. Hi, so thank you so much for the kind introduction, Vaishali and Rupali. I am glad to be here. I'm glad to be speaking to a lot of young enthusiastic sports persons and their parents, coaches, and whosoever has joined in today. Yes, so I have been a sports fanatic since maybe I can remember, since I learned how to walk. So I have been into sports, all kinds of sports. So I am a very keen football, table tennis, badminton player, and I play a lot of other sports also, like tennis, squash, cricket. I love playing all of these, and it has been my dream and my passion to get others also follow their dream and passion. So apart from playing this, I have also sustained injuries while playing all of these sports, and I have gotten treated
and I have gotten back to playing sports. So that is how I know that yes, after getting injured, it is still possible to get back to sports and still continue doing what you love. So that is the main thing that I'm trying to achieve in my career, and I'm trying to help a lot of sportsmen get back to their original competitive level of playing that they used to before injury also. So तो राहुल जी, अभी आपने इतने बताया कि इतने सारे गेम में, all I think you have included every game, but my question to you is like parents are like very much what we can say worried about कि ये सब खेलने के बाद जो इंजरी आती है तो इसके बारे में हमेशा वरीड रहते हैं। और आपने तो बोला मैं ये सब गेम खेलता था, और मुझे ये क्वेश्चन है कि एक गेम में अगर इंजरी आता है तो बाकी गेम के बारे में पेरेंट्स सोचते भी नहीं है, स्टूडेंट्स सोचते नहीं है, प्लेयर्स सोचते नहीं है, तो आपने कैसे ये सारे गेम खेलना? ये एक पेरेंटल ये है। सो पेरेंटल इंस्टिंक्ट है। मुझे जब फर्स्ट इंजरी हुआ था जिसमें मुझे ऑपरेशन करना पड़ा था, उसके बाद तुरंत मेरे खुद के मॉम डैड जो खुद डॉक्टर्स है दोनों, उन्होंने भी बोला था कि तू अभी खेलना छोड़ दे। सो दैट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल, ये काफी नॉर्मल चीज है जो हर एक पेरेंट के उससे आ जाएगा कि मेरे बच्चे को लग गया, अभी मुझे उसको सब बंद करा देना, एटलीस्ट सेफ रहेगा। बट मुझे ये बताना है कि इंजरी के बावजूद जो पहले जैसा बॉडी था वैसा ही बॉडी हो सकता है, वैसे ही लेवल पे हम खेल सकते हैं, और इंजरी हो के मैं समझा हूं कि कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इतना पढ़ाई करके मुझे अभी समझा है कि कैसे हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। शायद ये मुझे पहले पता रहता तो शायद मैं इंजर्ड नहीं होता और मैं खेल सकता। बट कितना भी प्रिकॉशन ले लो, अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं तो हमको किसी ना किसी तरह का इंजरी होने वाला है। उस इंजरी को हमको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करके हमें उसके साथ ही आगे चलना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स भी इंजर हुए हैं, इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद वो इंजर हुए हैं और वो अभी भी खेल रहे हैं। सो सिर्फ इंजरी के डर से हम खेलना छोड़ दे, वो दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। इवन मैक्सनैन का भाई वही एक मोटो है कि भाई कुछ भी हो आप खेलो और आपके आनंद के लिए खेलो, एंड इफ इट इज इंजुरी डेफिनेटली यू हैव सर्टेन सॉल्यूशन फॉर दिस। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव सर्टेन दैट पेशेंस लेवल एंड हीलिंग पीरियड। एक अगर आप पेशेंसली उसके ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रॉस दैट व्हाटएवर इंजरीज यू हैव। सो थिंग इज दैट मुझे और एक क्वेश्चन है, आप जब भी खेलते थे एज ए पेरेंट, आपके मम्मी डैडी ने भी बताया, तो एज ए डॉक्टर, तो एज पेरेंट्स के लिए किसी को लिए वो ये है ही नहीं कि भाई मेरा बच्चा को कुछ होता है तो, बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, बिगेस्ट इंजरी कैसे होती है, उसको रिकवरी में, और उसका माइंडसेट क्या होता है तभी, एंड आर यू वर्किंग ऑन दैट माइंडसेट आल्सो? सो आई थिंक माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल रिकवरी तो बॉडी का पार्ट है जो अपने आप होने वाला है। सो अगर डॉक्टर ने आपको इंजरी के बाद डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन किया है, आपने रिहैब अच्छा किया है, तो फिजिकल इंजरी तो रिकवर होने ही वाला है। माइंडसेट इज समथिंग दैट द पेशेंट हैज कंट्रोल ओवर। सो ये एक ही फैक्टर है जो पेशेंट के कंट्रोल में है, जो उसको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर रख के वापिस प्री इंजरी लेवल ऑफ स्पोर्ट पे जाना है, डरे बिगर जाना है। उसी सेम सिचुएशन में आने के बाद उसको या तो थोड़ा पीछे हटना है या तो उसके आगे अपने आप को पुश करके आगे जाना है। सो ऐसी काफी सारी दिक्कतें आएगी मेंटल लेवल पे भी, जिसको हमको ट्रीट करना है। काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन का अच्छे होने का कारण यह है कि क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। So mental strength is as important, or I may say a step further, more important than the physical strength. So ये हमको ट्रीट करना और इसके पे भी काम करना बहुत जरूरी होता है। At the same time इंजरी को प्रिवेंट करना भी हमारे हाथ में कुछ हद तक है। Right. So वो उसके पे भी मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बाद में दिखाऊंगा, जिससे हमको क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हम इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं वो समझेंगे। राइट।
So basically, even MaxNyan is also working a sportsmanship mindset and the mindset also. So मुझे ये कहना है कि see there are now you are very positive, you are saying कि injury recover हो सकता है, पहले जैसे हम खेल भी सकते हैं, but there are certain things like being a layman, people are like doctor is saying अभी आप खेल नहीं सकते, तो मोरल डाउन हो जाता है. एंड एज अ प्लेयर अगर वो एक बड़ी कंपटीशन के लिए जाने वाला हो और उसके लिए अगर ये हादसा होता है तो ये बहुत डिमोनेटलाइज हो जाता है उसके लिए. सो वो जो कंडीशन है, तभी डॉक्टर्स का कहना, बिकॉज डॉक्टर इज गॉड फॉर अस. Right? So correct. So that is where the specialization of a sports orthopedic doctor comes in. Yes. तभी आपको you have to try and realize कि जब भी हमको इंजरी हुआ है और मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, हमारे पास स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जो ये चीज समझते हैं जो शायद हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या हर एक फिजिशियन या हर एक जनरल प्रैक्टिशनर नहीं समझ पाएगा. एब्सोल्युटली. कि वो इंजरी के क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, उसका नेचुरल हिस्ट्री क्या है, उसका रिकवरी कितना टाइम लगने वाला है. सो गेटिंग टू द करेक्ट डॉक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमको सही सलाह मिल सके. So again, same thing, this focus, skill and speciality. Correct. Absolutely. Yeah. So, doctor, what made you go and get into the specialization? So, what actually motivated you to get into specialization? So, मैंने ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया, उसके आई थिंक 2 महीने पहले मुझे एक मेजर इंजरी हुआ था जिसको ACL टेयर बोलते हैं. फुटबॉल खेलते वक्त ही हुआ था. मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था फुटबॉल गेम में और तभी खेलते खेलते मैच के वक्त मुझे ये ACL इंजरी हो गया था. 1 महीने बाद उसका सर्जरी हुआ. 2 महीने के बाद मैंने मेरा ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया और उसके साथ साथ मैं चल रहा था. वो इंजरी के रिकवरी के साथ साथ ही मैं अपना रिहैब भी कर रहा था. ऑर्थोपेडिक्स भी नया नया ज्वाइन किया था, तभी नई नई चीजें सीख रहा था. स्पोर्ट्स में मुझे कीन इंटरेस्ट हमेशा से था और ये इंजरी के बाद मैंने देखा कि 7-8 महीने के बाद, even with my rigorous schedule of orthopedic training, I was able to run, I was able to play football, I was able to do everything that I love. So that is what motivated me कि नहीं, अगर मुझे orthopedics बनना है तो मुझे इस चीज में और आगे करना है. मैं जैसे ठीक हुआ मुझे और जनों को भी ऐसे ही ठीक करना है ताकि मैं काफी सारे स्पोर्ट्समैन की मदद कर सकूं और उसको विश्वास दिला दूं कि ये सब रिकवर हो सकता है. बेसिकली स्टूडेंट, कोचेस, उनको भी लगता है कि अभी ये खेल नहीं सकता, ये खेल नहीं सकता. और बेसिकली इंडिया में भी और एक वो थोड़ा सा जेंडर डिफरेंस है ही. दिस इज नॉट दिस राइट प्लेटफॉर्म, बट बच्चा लड़की है तो शादी कैसे हो जाएगी. एब्सोल्युटली. सो स्कूल से भी है ना, बच्चे को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है कि तू खेळू नको, तू नंतर बघ. So how we are going to deal with that, because this is very important. So a lot of our female personalities are doing, getting medals for India more than our men. So yes. It is important to realize that man or woman sport doesn't differentiate between man or woman. Yes. The same way we should not differentiate between that कि तू मुलगी है खेलू नकोस. That is absolutely a wrong. That is happening for education also, and unfortunately it is happening for sports also. But at the same time, as you said, this is not the right platform to discuss this, but I think it is important for parents to realize. Here is where the parents' role plays a major part. कि parents to realize कि ये भी आगे जाके मेरा नाम रोशन करेगी. सिर्फ लड़का ही नहीं करता है, लड़की भी कर सकती है. Absolutely. So there are a lot of audiences today on FB Live, and I would definitely request all of you to thank you very much. We are really grateful for being here, and we would like to have your sharing, and we'd like to have questions if you want to ask doctor today. So definitely put them in the comment box, and we will ask doctor on your behalf. Yes, Rupal, you can continue. तो अभी स्कूल से भी MaxNyan is working on developing sports culture in different schools. तो स्कूल के बच्चे जो है लाइक प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, तो उनको भी एक लगता है कि खेलना चाहिए, बट ये इंजरी के बारे में अगर सोचते हैं तो आगे थोड़ा सा उनको एक स्पीड ब्रेक हो जाता है कि थिंकिंग में भी.
So आप उसको कैसे how you are going to address this to the parents especially? So injury prevention is not a single, एक सिंगल चीज से इंजरी प्रिवेंशन नहीं हो सकता है. इंजरी प्रिवेंशन के लिए हमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हाई रिस्क स्पॉट्स है. तो उसका एक लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखाना चाहूंगा. सो वी विल गेट टू दैट. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि सब लोग देख सकें. श्योर. कुछ चीजें हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज इन्फ्लुएंस करेगी. एक है कि तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो. ये जानना सबसे जरूरी है कि कौन से स्पोर्ट में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है, कौन से स्पोर्ट्स में इंजरीज होने के चांसेस कम है. सेकेंड है कि अगर हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं तो कौन से टाइम ऑफ द सीजन में हम खेल रहे हैं, उसके हिसाब से भी स्पोर्ट इंजरीज होने के चांसेस होते हैं. पिछली बार प्रीवियस इंजरी हमको कोई हुआ है कि नहीं, दैट ऑल्सो इज अ मेजर फैक्टर कि वापस इंजरी हो सकता है. एथलीट का फिटनेस लेवल और उसका ट्रेनिंग शेड्यूल डिपेंड करता है. और लास्ट विच इज अ लिटिल लेस नोन इज कि वो एथलीट का बिल्ड कैसा है, कि एथलीट का एनाटॉमी कैसा है, एथलीट कैसे बना है. सो अगर हम हाई रिस्क स्पोर्ट्स देखें तो हाई रिस्क स्पोर्ट्स में जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है वो काफी, उसमें इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा है. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब जिसमें कोई हमको टैकल करने की कोशिश कर रहा है उसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं. तो जैसे फुटबॉल हुआ, रग्बी हुआ, बास्केटबॉल हुआ, रेसलिंग हुआ, बॉक्सिंग हुआ, ये 5 स्पोर्ट्स में इंजरीज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. जो मीडियम रिस्क में है उसमें है जिसमें हमको बहुत भागना पड़ता है बट कोई हमको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो मीडियम रिस्क में आ गए. सो बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, रनिंग, एथलेटिक्स में हम भाग रहे हैं सब में, पर कोई हमको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसमें रिस्क, इंजरी के रिस्क कम है. और एकदम लो रिस्क स्पोर्ट्स वो है जिसमें बहुत ज्यादा भागना दौड़ना नहीं है, जैसे कि टेबल टेनिस, गोल्फ, आर्चरी, साइकिलिंग, स्विमिंग. तो इसमें रिस्क इंजरीज के कम होते हैं. नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ द सीजन. सो टाइमिंग मतलब डॉक्टर, Yes. just out of curiosity, Yes. go back to the slide. Yes. Yeah. So यहाँ पे क्रिकेट, मल्लखांब, कबड्डी, ये गेम्स कहाँ पे आएंगे? बिकॉज क्रिकेट जो है वो नॉन कांटेक्ट में आएगा, कोई हमको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट ऑफ कोर्स भागना बहुत पड़ता है, तो वो मीडियम रिस्क में आ जाएगा. ओके. मल्लखांब और जिम्नास्टिक्स जो है वो भी मीडियम रिस्क में आ जाएगा, बिकॉज उसमें काफी सारे स्ट्रेचेस काफी सारे स्ट्रेचेस होते हैं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, काफी एथलेटिसिज्म जरूरी है, पर उसमें वापस हमको कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है. सो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मीडियम रिस्क में आएगा. ओके. ऐसे ही स्पोर्ट्स जिसमें कोई हमारा अपोनेंट है जो हमको गिराने की या मारने की कोशिश कर रहा है, वही हाई रिस्क में आएंगे. ओके. ओके, थैंक यू. यस, थैंक यू. So timing. Favorite sport? I asked you that question. My favorite sport is football. So it is the most, it is the highest risk. High risk. Yeah. Highest, not high. Highest. Correct. So timing of the season is also important. कि जब भी हम start of the season में शुरू करते हैं, मतलब सीजन कैसा होता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन का, 8 months का सीजन होता है, 4 months का रेस्ट होता है. दिस इज द अप्रोक्सीमेट थिंग दैट वी लुक एट. सो 8 months के सीजन में जब भी वो सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं, स्टार्ट और एंड ऑफ द सीजन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ध्यान रखे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सीजन में वो लोग 4 महीना रेस्ट करके आए हैं, उनका थोड़ा डीकंडीशनिंग हो गया रहता है, तो इसीलिए उनको रिस्क ज्यादा है. एंड ऑफ द सीजन में क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ तो भी अचीव करना कोशिश करते हैं कि कोई कंपटीशन जीतना है, उसमें वो लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं, तो एंड ऑफ द सीजन में रिस्क ज्यादा होता है. सो दीज आर द 2 टाइम पीरियड्स वेयर विच आल्सो डिटरमाइंस कि हाँ, इसमें रिस्क होने का, इंजरी होने का चांस ज्यादा है. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंजरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपने देखा रहेगा कोई प्लेयर इंजर होता है और फिर घड़ी वो इंजरी करते, आउट, ही इज आउट ऑफ द सीजन. द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इज, क्योंकि एक तो वो वापस इंजरी के बाद पूरा रिकवरी ना होने के पहले ही वापस आ जाता है, तभी इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है. सो ऐसे लोगों में इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू find the complete, so any injury has a biological time to return, so we have to give that biological time for our body to return to that level of competition, and then only we don't hurry up. Hurry is worry. So
we don't try and hurry up and get back to sport very soon. True. Fitness level, we know that yes, it is important. So, unfit player will get injured soon and early and faster. Again, people are over 30, 35, 40 who are playing because of their biological, less, जितना ये होता है वैसे उनको इंजरी के चांसेस ज्यादा है. ट्रेनिंग शेड्यूल हम सबको मालूम है, वार्म अप करना है, कूल डाउन करना है, कितना घंटा ट्रेनिंग करना है, वो सब साइंटिफिक डेटा अभी आजकल काफी लोगों के पास अवेलेबल है. तो ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत जरूरी है कि कोचेस, एथलेटिक ट्रेनर्स और उनके पेरेंट्स ध्यान दें कि वो ओवरडू नहीं कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग में ओवरडू नहीं कर रहे और बिना ट्रेनिंग किए भी प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं खेल रहे. सो ये दोनों चीज जरूरी है इसमें. और लास्ट चीज है एनाटॉमी. सो काफी सारे एनाटॉमिकल वेरिएशंस होता है. काफी लोग ओवरयूज इंजरीज को ज्यादा प्रोन होते हैं. वो हमको फाइंड आउट करना है बाय, लाइक यू सेड, करियर काउंसलिंग. Rupali or Vaishali, one of you all had taken up this topic कि career counseling is important. So career counseling at a lower age is the most important thing. Because I get into a sport, 4 साल स्पोर्ट खेलने के बाद, उसके ट्रेनिंग करने के बाद करियर काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने 4 साल वो स्पोर्ट के लिए ट्रेनिंग किया है. Exactly. For football is different, training for tennis is different. तो 4 साल के बाद अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं, यू आर नॉट फिट फॉर फुटबॉल, अभी तुम टेनिस खेलना शुरू करो, मेरे मेन ईयर्स तो वो फुटबॉल ट्रेनिंग में गए. सो वो जानना जरूरी है. कुछ चीजें हैं जैसे कि हम नॉकनीज बोलते हैं. नॉकनीज मतलब आर्मी की ट्रेनिंग के लिए या फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए नॉकनीज अगर है मुझे, तो मुझे इंजरी के चांस ज्यादा होते हैं. सो वो एक चीज, वो सब अर्ली assessment by a doctor or a physiotherapist or some sports, someone who has knowledge about sports, वो करना जरूरी होता है, which will help us avoid injuries. Super. So doctor, we would like to understand what is the age. So before we go ahead, what is the age of the kids when parents should actually identify the anatomy or the physical strength or weaknesses of the muscles? So the usual age is somewhere between 10 to 12 years. So 10 to 12 years is when a sportsman should be assessed in physical this thing, whether he should start, if he's thinking of that as a career. This is only for them who are thinking of that sport as a career, should get a medical assessment done. उनको एक मेडिकल चेकअप करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए किसी स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ कि वो ये स्पोर्ट खेलेगा तो उसको इंजरी के चांसेस ज्यादा है, कम है, कर सकता है, नहीं करना चाहिए. Will he be better at some other sport? Yes. Very true. There are some characteristics in a person which would tell us कि नहीं, ये इससे अलावा वो खेलेगा. जैसे हमारे एक मूवी में एक डायलॉग था कि मैं सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग कराता या लता मंगेशकर को बैटिंग कराता तो फिर वो सक्सीड नहीं होते थे. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो वेदर दैट पर्सन इज फिट फॉर दैट स्पोर्ट और नॉट. Absolutely, very true. MaxNyan is trying to do that only. Absolutely. Early age उसमें find out कर सकते हैं, though it is career हो, general career हो और sports career, because this is very important to identify at the younger age. Yes, absolutely. Yes. So injuries हम जब बोलते हैं, so injuries में 2 टाइप की इंजरीज आते हैं. एक है जिसको हम ओवरयूज इंजरीज बोलते हैं. ओवरयूज इंजरीज मतलब वो किसी एक्सीडेंट या मार लगने की वजह से इंजरी नहीं हुआ है, वो काफी टाइम से वो पेशेंट को या उस इंसान को थोड़ा थोड़ा पेन होता गया है और उसके वजह से इंजरी हुआ है. तो ये ओवरयूज इंजरीज जो है उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग होता है. और जो अक्यूट इंजरीज है, मतलब मैं खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, गिर गया, सूजन आ गया, लिगामेंट टूट गया, मसल टूट गया, बोन टूट गया, वो अक्यूट इंजरीज अलग होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ओवरयूज इंजरीज वर्सेस अक्यूट इंजरीज, एंड देयर आर थिंग्स वी कैन डू टू अवॉइड ओवरयूज इंजरीज. अक्यूट इंजरीज के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीजें नहीं है जो हम कर सके, बिकॉज दैट इज एन अक्यूट इवेंट, दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल. बट ओवरयूज इंजरीज जो लोगों को काफी सालों तक इरिटेट करती रहती है, जो काफी सालों तक फ्रस्ट्रेट करती है, उसको हम कम करने के लिए चीज कर सकते हैं. सो ओवरयूज इंजरीज के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं. जैसे मैंने पहले बोला, हाई रिस्क स्पॉट और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है.
ईटियोलॉजी और मैकेनिज्म, मतलब कि कैसे इंजरी होता है और किस चीज करने से इंजरी होता है वो फाइंड आउट करना है, प्रिवेंटिव मेजर लेना है, और अगर इंजरी हुआ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है. Super. But what you mean by proper treatment? कभी ऐसा, and what is the treatment? Sorry, period कितना? Healing period. So healing period is different for different injuries. नी का इंजरी हुआ तो अलग चीज, अलग ये है. नी में इंजरी में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन इंजरी जो लोगों को होता है उसको ACL इंजरी बोलते हैं नी में. So ACL is anterior cruciate ligament. वो ligament है नी में. It's the most common spot injury that happens. So ACL इंजरी अगर partial tear है तो उसको 3 to 4 months लगेगा without surgery to get healed. Complete ACL tears usually will not heal before, without surgery. तो उसको सर्जरी करना पड़ेगा और उसको सर्जरी के बाद 6 months to 9 months लगेगा after surgery to get your recovery. So Dr. Modi, one question, like we both are cricketers, you are footballer. अभी ऐसा है कि इंजरी होने के बाद है ना, प्लेयर्स को देखने का, प्लेयर्स की तरफ देखने का एक नजरिया बदल जाता है कि ये तो इंजर्ड है, तो अभी कैसे रिकवर कर पाएगा. तो ये भी, दिस इज ऑल्सो माइंडसेट, तो आप मेडिकल लैंग्वेज में इसको कैसे, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस? So see, injury is a very broad terminology मेरे हिसाब से. अभी अगर हमको माइनर सिर्फ मसल पुल हुआ है, हैमस्ट्रिंग पुल हुआ है, तो फिर हमको उसको देखने का नजरिया यूजुअली नहीं बदलता है. पर अगर ऐसा कोई मेजर इंजरी हुआ है जिसमें सर्जरी करना पड़ा है, तो फिर हमको यूजुअली वो आप जो बोल रहे हो देखने का नजरिया, क्या वो पहले जैसा खेल पाएगा, वो जरूरी है. सो कोई भी इंजरी के बाद रिटर्न टू प्ले का एक टेस्ट आता है. So there is a return to play tests that the patient undergoes, जिसके बाद हम उनको क्लियरेंस देते हैं कि हाँ अभी आप जाके वो प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल सकते हो. जब तक तू वो रिटर्न टू प्ले टेस्ट वो पार नहीं कर पाता है, जैसे कि क्रिकेट में आपने सुना रहेगा वो योयो टेस्ट है. सो योयो टेस्ट करने के बाद ही वो क्रिकेट, कोई भी क्रिकेटर योयो टेस्ट पास करने के बाद ही वो खेल सकता है. वैसे ही पोस्ट इंजरी एक अलग टेस्ट शेड्यूल है हमारे पास, जिसको हम RTP टेस्ट बोलते हैं, रिटर्न टू प्ले. सो रिटर्न टू प्ले टेस्ट करने के बाद पेशेंट अगर वो रिटर्न टू प्ले टेस्ट पास कर सकता है तो फिर वो अपने रेगुलर लेवल पे खेल सकता है वापस. और बार बार की प्लेयर वही वहां पे इंजर्ड होता है कि एक ही जगह पे कभी कभी? करेक्ट. सो दैट इज व्हाट आई सेड. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंजरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रीवियस कोई इंजरी है जिसको पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो फिर वो घड़ी घड़ी उसी जगह पे इंजर हो सकता है. सो फॉर दैट ही हैज टू मीट द राइट काइंड ऑफ डॉक्टर हु अंडरस्टैंड्स हिज इंजरी, हु अंडरस्टैंड्स व्हाट स्पॉट ही इज प्लेइंग, एंड हु अंडरस्टैंड्स व्हाट functional demand he is going to have. So same injury in two different people cannot be treated in the same way. Yes. Yes, you can continue with the presentation, doctor. Okay. So if there are any questions, I would be happy to take home messages. अगर मेरे को एक शॉर्ट में किसी को इंजरी प्रिवेंशन के बारे में बताना है, तो फिर एक तो हमको पानी पीते रहना है, हाइड्रेट एडिक्वेटली करना है, हमको इक्विपमेंट सही यूज करना है ताकि हमको इंजरी ना हो. अगर हमने ब्रेक लिया है तो पहले ही दिन से हमको ओवरडू नहीं करना है. मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे हमको फोकस करना है. वार्म अप और कूल डाउन जरूरी है. कभी भी एज अ बॉल पार्क अगर मैं बोलने जाऊं, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए. 2 हफ्ते से ज्यादा अगर रेस्ट लेने के बाद भी पेन कम नहीं हुआ है तो किसी स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा दीजिए. खेलना बहुत, playing sports is a lot of fun, getting hurt is not. So we have to make sure that we don't get hurt and we continue playing. Absolutely. Yeah. So here, doctor, you had also. So I stop. Will we be able to stop the screen sharing? So Yes, absolutely. Yes, you can continue. Yeah.
So, you have also done some research on badminton injuries in elite athletes. Yes. So, what was that all about? If you can share about it, some insights. So badminton is a sport जिसमें shoulder use is very very prevalent. बाकी सारे sports में apart from volleyball I cannot think of a sport which has so much use of a shoulder as much as the badminton has, because badminton the shoulder goes into the most I would say worst position for injury, which is the overhead position. So usually shoulder injuries will not happen when the shoulder is beneath the shoulder level. So badminton is one of the sports in which we have to take the shoulder into this level where maximum injuries can occur. Now because the shoulder is such a joint, shoulder ऐसा joint है जिसमें हमको maximum range of motion दिया है. Right. जितना रेंज ऑफ मोशन शोल्डर जॉइंट में है उतना रेंज ऑफ मोशन बॉडी के किसी भी जॉइंट में नहीं है, हिप जॉइंट में भी नहीं है. अभी शोल्डर ऐसा जॉइंट है क्योंकि उसको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है. सो इफ आई शो ऑडियंस, दिस इज द शोल्डर जॉइंट. सो दिस शोल्डर जॉइंट इज अ जॉइंट जिसमें द कप इज वेरी स्मॉल and the head or the ball kept on the cup is very large. It's like a lemon on a spoon. So the chance of that ball getting dislocated again and again is very high. Right. So with great range of motion comes great instability. जितना हमको रेंज ऑफ मोशन एक जॉइंट में ज्यादा है उतना ही वो जॉइंट अनस्टेबल होगा. जब हम घड़ी घड़ी ये रेंज में जाते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स को मोस्ट ऑफ इंजरीज शोल्डर में होता है. Right. So that is what we had tried and done, that we had tried and evaluated the injuries that can occur in a badminton player because he's using the shoulder joint so much. Also, there are other joints like the ankle. So because there is a lot of jump and smash in badminton, a lot of players get ankle injuries. So the second joint that gets injured after the shoulder joint in a badminton player is the ankle joint. Okay. So that is what we had tried and done a study in which we interviewed and we took the data of so many elite badminton players and we tried and saw which injuries they are having maximum, what was the length of the injury, how well they recovered, how many required surgery, how many did not require surgery. What was the ankle injuries? What was the third most common joint? So the third most common joint was the elbow, where the players were getting injured in the elbow a lot. So that is what we had tried and done in that study. So basically, see, badminton, you are talking about the shoulder injury, but the cricket is all about different game. Like, 5 days का game है. So whole day पूरा दिन चला जाता है उसमें. तो दिस गेम्स आर लाइक 1 or 2 hours के गेम है. बट क्रिकेट इज ऑल अबाउट लाइक पूरा दिन वहां पे तो स्ट्रेंथ बहुत है वहां पे. तो हाउ यू एड्रेस दिस क्रिकेट में? क्रिकेट में अगेन डिपेंड करता है कि आप बॉलर हो कि बैट्समैन हो. सो अगेन बॉलर्स को शोल्डर इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा है. बैट्समैन को वैसे कोई मेजर इंजरीज apart from tennis elbow nahi hote. So tennis elbow is the most common problem that batsmen face because they are using their elbows too much, getting a lot of power from their elbows while hitting. I should say tennis elbow. जब ये सचिन तेंदुलकर को हुआ तो मुझे लगा ये क्रिकेटर है, उसको टेनिस elbow. सचिन तेंदुलकर के पहले ये बीमारी इजाद हुई थी. और so I actually tennis elbow is also a misnomer. Tennis elbow maximum tennis players में नहीं होता है. The first known case was maybe a tennis player and that is why it was named tennis elbow. But tennis elbow is a misnomer. A lot of tennis players get actually a medial sided pain, whereas a tennis elbow is a lateral sided pain. So that is also something which is worth noting. But at the same time, cricket में injuries से ज़्यादा हमको cramps, dehydration, stamina वो सब के बारे में ध्यान ज़्यादा रखना है. Hamstring pulls because of lack of water, a lot of sweating. It's played in the sun. It's an outdoor sport, not an indoor sport like others. So a lot of other factors play a role in cricket.
And that is why it is not a very, very high risk sport. Not a lot of people will get injured while playing cricket. They'll suffer, a lot of people will suffer muscle cramps and dehydration and pulls and all of that. But injuries as such, ज़्यादा नहीं होती. I think Vaishali is a very worst station, जिसने अभी इंजुरी की वजह से खेलना बंद कर दिया है, और जिनके पेरेंट्स अगर सुनते हैं, जो भी वो अगर वो एंजॉयमेंट के लिए, अगर फन के लिए भी खेलते हैं और इंजुरी की वजह से वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी प्रैक्टिकल, वर्थ है सुनना, और वो कैसे है, बिकॉज राहुल जी बहुत अच्छी तरह से ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड मेरा रिक्वेस्ट जो भी व्यूवर्स है उनके लिए भी है कि अगर आपने बंद किया होगा खेलना तो जरूर शुरू कर दीजिए, और टेक एडवाइस फ्रॉम मिस्टर मोदी, डॉक्टर मोदी. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक स्कूल से भी अभी जो वापस हम वही यंगर एज में आते हैं, बिकॉज क्या हो जाता है, जैसे हम भी वही कोशिश करें कि यंग एज में जितना आइडेंटिफाई हो, और ये सब करने में भी थोड़ा माइंडसेट नहीं है. दिस इज नॉट नेगेटिव थिंग, बट वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, बिकॉज यू आर वॉट एवर दिस यू आर एक्सप्लेनिंग इज वेरी फैंटास्टिक. तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ये कैसे, क्या, तो इसके स्टेप्स कैसे है, वो किस तरह से उनके कोचेस के साथ बात करें, उनके ट्रेनर के साथ बात करें, जिम में भी जाते हैं तभी उनके साथ कैसे बात करें. तो आपका क्या एडवाइस रहेगा इन सब के लिए, कोचेस के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कि इस किस तरह इस इंजरी को देखना, वो आप हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू आई डोंट नो, किस तरह से देखना चाहिए. Correct. So it is important for trainers and coaches to understand कि जब भी हम कोई प्लेयर को इंजरी होता है, वही टाइप का इंजरी उन्होंने पहले देखा हुआ होता है, बिकॉज अ कोच सीज अ लॉट ऑफ इंजरीज इन देयर स्टूडेंट्स. Most of the time what I have tried and seen is a lot of coaches will try and dictate try and treat their injuries themselves. Exactly. अच्छा ये है, तू ऐसे कर दे एंड हो गया. बट मुझे कोचेस को ये बताना है कि काफी सारी छोटी छोटी इंजरीज एक दूसरे को क्लिनिकली बहुत ज्यादा मिमिक करती है, पर उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग होता है. So it is important to identify what exactly is wrong with the player, whether it is a ligament injury, whether it is a meniscus injury, whether it is only a muscle injury, whether it is a bone injury. All of these injuries are very, very similar to each other, in which pain सब में होगा, swelling सब में आएगा, चलने में सब में दिक्कत आएगी. तो after so many years also, sometimes I have to rely on other methods rather than only my clinical judgment to get exactly, जैसे मुझे एक्सरे करना पड़ेगा, MRI करना पड़ेगा, exactly कौन सी चीज इंजर हुआ है वो देखनी पड़ेगी. कभी कभी मैंने देखा है कि काफी सारे कोचेस अपने खुद के ही एक्सपीरियंस से ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं. सो ये ना करें, बिकॉज sometimes a delay in treatment can, for some people, so maximum people will get better with that, I'm not denying, but for that 1 or 2 people who actually have something else, unko wo they lose out on those precious months of their life also. And they are also, sometimes we've seen ki wo injuries की वजह से काफी निग्लेक्ट करने की वजह से काफी सारी चीजें, डिजास्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस इन द रिसेंट फ्यूचर हो गए हैं. सो ऑलवेज कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट एंड गेट द राइट ट्रीटमेंट डन एज अर्ली एज पॉसिबल. यस, यही क्वेश्चन था, रिपीट कर रही थी ये क्वेश्चन, बिकॉज कैसे होता है कि मुझे भी हुआ था, तू भी ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे, और ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आई डोंट नो कैसे हुआ तुझे. तो ये सब कैजुअल बहुत सारी चीज, बिकॉज ये करियर डिपेंड करता है. एक मेडिकल अगर एक्सपर्ट से एडवाइस ली जाती है तो कैसे उसका रिजल्ट निकलता है, और नहीं है तो क्या हो सकता है. इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रिपीट किया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट फॉर द प्लेयर. Correct. So another thing that I would like to show you and everyone is I'll just go back to my previous slide. As to how to treat an acute injury. So this treatment is called price therapy.
I think a lot of y'all should make note of this treatment. So this is something which is called price therapy, and this price therapy can be given to any person without any problem. So you do any of this, this is not going to harm that person. ओके तो प्राइस में क्या आता है, सबसे पहले कोई इंजरी, अगर मेजर इंजरी लग रहा है आपको, तो उस जॉइंट को प्रोटेक्ट कर दो, मतलब उस जॉइंट को जैसे है वैसे ही रहने दो, पूरा सीधा कोरन करने की कोशिश मत करो, पूरा अपने आप से कुछ बेंड करने की कोशिश मत करो, अरे ये तो ठीक है मैं खींच के देता हूं, वैसे मत करो, प्रोटेक्ट करो। सबसे पहली चीज है उसको प्रोटेक्ट करो, जैसे है वैसे रहने दो। दूसरा, उसको रेस्ट दो। सो रेस्ट देंगे, आधा पेन आधा स्वेलिंग अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरा है उसको आइस करो। आइसिंग इज द मैजिक ड्रग आई वुड से फॉर ऑल अक्यूट इंजरीज। थर्ड है उसको थोड़ा सा क्रेप बैंडेज या किसी भी चीज से कंप्रेशन थोड़ा सा दे दो। क्रेप बैंडेज इज द बेस्ट थिंग, क्रेप बैंडेज से थोड़ा कंप्रेशन दे दो। और चौथा है स्वेलिंग कम करने के लिए उसको एक हाइट पे रखो, मतलब अगर पैर टूट गया है या पैर में कोई इंजरी हो गया है तो उसको 1 या 2 पिलो के ऊपर रख दो और स्वेलिंग अपने आप कम हो जाएगा। तो ये किसी भी इंजरी में करोगे तो ये पेशेंट को हार्म नहीं करने वाला है, और इससे 50% एटलीस्ट उसका पेन और स्वेलिंग कम हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल ट्रीटमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि जहां पे इंजरी हुआ है वहां पे क्या करे, वहां पे तो मैं नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे क्या करे, तो वहां पे ये सब चीजें कर सकते हैं। राइट, fantastic. So doctor, we have one question here. In 10-pin bowling game, the players get a lot of pain in shoulder and lower back, because I think they have to use only one hand, either the right hand or whatever. Right. They have to bend and correct. So the back pain is because of bending, and more than shoulder pain, what I've seen patients having is a lot of elbow pain. So heavy रहता है ना बॉल, हाँ हेवी रहता है वो, एल्बो पे उनको एकदम स्ट्रेट रख के ही वो डालना पड़ता है। सो उसमें मैंने देखा है कि एल्बो पेन ज्यादा होता है रादर देन शोल्डर पेन। ऑफ कोर्स एवरी पर्सन इज डिफरेंट, 100 में से सपोज 70 को एल्बो पेन होगा पर 30 को शोल्डर पेन हो सकता है। देयर इज फिंगर्स इन एल्बो के ऊपर उसका थोड़ा ये रहता है ना फोकस। a lot of muscles that go to our finger are originating from the elbow. Right. तो इसीलिए एल्बो पेन होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन शोल्डर पेन। ऑफ कोर्स शोल्डर हमको मूव करना है, बट बिकॉज हमको बॉल हाथ हेवी बॉल हाथ में पकड़ना है, तो एल्बो पेन के मैंने लोगों को ज्यादा हुए देखा है। But of course, back pain is because you are bending a lot. So the only thing you can do is a lot of core strengthening exercises or back strengthening exercises. जितना आपका core strong रहेगा, उतना आपका इंजरी या बैक पेन होने के चांसेस कम रहेंगे। Right. So anyone who is suffering from a lot of back pain for after 10-pin bowling should do core strengthening exercises that will reduce his or her back pain to a great extent. Shoulder pain ideally is not because of the bowling. It might be because of something else. So they should get it checked out, why they are having so much shoulder pain. But shoulder pain might not be related to the bowling. Of course, it might be aggravated because of the bowling, but it might not be primarily because of the bowling, is what I, We have Rajesh Lotlikar, who is an international level 10-pin bowling player. And okay. Right. He had put this question forth. So thank you, Rajesh ji, for this question. And we also had Mr. Parag Ajmera. He had complimented about the session. So thank you very much, Parag ji. So those audiences who are watching this session and have any questions can please put it on the comment box, so that we can definitely address those questions right here when doctor is available with us. Yes, we can definitely address those questions later as well, because doctor can answer them at a later stage. But if you share your questions, then it would definitely benefit others also who would be watching the sessions later as well. Thank you. Yes, Absolutely. तो सबसे कम इंजरी वाला गेम कौन सा है?
Carom. Yeah. Yes. Chess, yes. Yeah. But I think carom also needs the use of Finger fingers, strength. where Yeah, but correct. But I have never gotten a patient who's injured while playing carom. So Safest and coolest, वो we can sorry. say. Safest and coolest, अंदर बैठ के खेलना है. Exactly. One more question. See, since you are a footballer, like aggression बहुत रहता है फुटबॉल में, तो ये aggression के साथ इंजुरी बढ़ती है क्या, कैसे रहता है उसमें? एग्रेशन मुझ में है तो किसी और को इंजरी होने का चांस ज्यादा है, पर मेरे एग्रेशन की वजह से मुझे इंजरी होगा वैसा चांसेस थोड़ा कम होता है. हाँ, नहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका किक लग सकता है दूसरे को, तो इंजुरी आपकी वजह से दूसरे को भी हो सकती है. हाँ, सो मेजर फुटबॉल है, लग सकते हैं. फुटबॉल में समझना है कि मेजर इंजरीज मेरे किक, सो अगर मैंने किसी और को किक भी मार दिया तो भी मेरे किक में इतना पावर या किसी के भी किक में इतना पावर नहीं होगा कि वो किसी का बोन या लिगामेंट तोड़ दे. इंजरीज कब हो रहा है? जब मैं भाग रहा हूं और किसी ने मेरे भागने के बीच में पैर डाला और मेरा ही बॉडी वेट अपने मेरा पैर ट्विस्ट हो गया. सो इट इज अ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ट्रॉमा. It is because of the stop in the momentum that you get injured. Unknowingly or unawarenessly. Yes, absolutely. So it is because of the momentum that you get injured. It is not because of a direct trauma. You're right. So one more question related to football only. मैंने एक बार पेरेंट्स का एक बार सुना था कि मेरा बेटा ना ज्यादा भाग नहीं सकेगा तो उसको गोली बना दो, तो वो गोल पोस्ट पे खड़ा रहेगा और उसको कुछ भागने की जरूरत नहीं हो. तो ये भी एक माइंडसेट है, पर इंजुरी वहां पे भी हो सकती है अगर गलत तरीके से बॉल लग गया तो. गोलीज को मैक्सिमम इंजरीज रिस्ट में होता है. सो गोलकीपर्स को मैक्सिमम इंजरीज रिस्ट में होता है क्योंकि उनको भागना नहीं पड़ता है. राइटली दे डोंट हैव टू रन टू मच, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आर stopping the ball with their hand, if the wrist is not kept tight, if my wrist is not kept tight, what happens is the ball hits my hand with a lot of force and my hand goes like this. So that is why the most important thing or the most important joint that the goalkeeper has to save is his wrist. Right. Because you try and stop a kicked football with a loose wrist, immediately you are going to sit down with that wrist. So chances of fracture are also there. There is chances of wrist ligament injuries, sprains, muscle injuries. All of that is there with the wrist. So फुटबॉल में कैसे, हॉकी में कैसे वो पूरा ये गार्ड्स डाल के हेलमेट वगैरह करके वहां पे गोल कीपिंग करता रहता है, वैसे ही कीपिंग है. हॉकी का जो बॉल है ना, इट्स अ वेरी हार्ड बॉल. फुटबॉल का बॉल हवा भरा है तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके हॉकी का बॉल अगर किसी के आंख में लग गया तो वो आंख भी फोड़ सकता है, बट फुटबॉल नहीं कर पाएगा ऐसा. फुटबॉल माइट जस्ट knock you off for a couple of minutes, but it's not going to cause a localized hematoma. टेबल टेनिस में कौन सी इंजरी हो सकती है? वो फास्टेस्ट गेम है, क्विकेस्ट फास्टेस्ट है. हाँ, बट टेबल टेनिस में यूजुअली इंजरीज कम होती है. टेबल टेनिस इज वन ऑफ द लो रिस्क games for if you try to categorize or classify it. Table tennis में maximum injuries, I have, to be very honest, not seen too many table tennis players getting injured. But if I was trying to think, it would be a shoulder injury which a table tennis player would occur. और एक मैराथन के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं. So marathons is again a medium risk sport. Marathons में most common pain is hamstring pain. The most common muscle used for running is our hamstrings. And the most common chronic pain for marathon runners is their chronic hamstring pain. So जो हमारे बैक एरिया में जो आई के पीछे वाला मसल है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, और वो हैमस्ट्रिंग का पेन होने का सबसे ज्यादा चांस है.
ये यूजुअली पेन्स जो होते हैं वो वापस क्रॉनिक ओवर यूज पेन्स के वजह से होता है. This is again not an acute injury. As we classify it, it is an overuse chronic hamstring tendinopathy that we call it. And that depends on, uska treatment depends on somewhere between 4 months to 8 months for the treatment for hamstring pains. Perfect. Great. So there is a question from Krupa Ajmera. So Krupa ji, we would like to tell you that yes, Dr. Modi, we have already informed in our introduction about Dr. Modi that he is a specialized MD orthopedic and orthosports. So he has a specialization into sports. He's a sports orthopedic surgeon also, we can say that. And yes, you can always contact us. You can contact him through the our details are already shared. Yeah. Perfect. So thank you मोदी जी, because ये जो टॉपिक है जिसे हम शुरुआत कर दी कि स्पोर्ट्स इन करियर कैसे होना चाहिए, तो बिगेस्ट रिस्क उसमें आती है कि पेरेंट्स को पहले ही थोड़ा सा ये होता है कि ये अगर खेलेंगे तो क्या होगा, वो वरीड पहले से ही हो जाता है. तो आज का क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव था. जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट्स करियर एज ए करियर करना चाहते हैं, जो प्लेयर्स अभी भी करियर कर रहे हैं और उनको थोड़ा एक हमेशा एक डर रहता है कि इसका अब आगे मेरा करियर कैसे होगा, इसके अगर आपने यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो वर्थ है सुनना. अगर वो अभी सुन नहीं पाए तो आगे जाकर ये अगर वीडियो देखते हैं तो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है. और इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी प्लेयर्स है कि अगर आपको कोई इंजरी तो डॉक्टर मोदी के साथ हमेशा आप जुड़े रहिए, उनके साथ उनका एडवाइस लीजिए, बिकॉज खेलना जरूरी है. मैक्सनैन का भी यही कहना है कि आप खेलिए. आपने एक लिखा था कि फन के लिए, यू हैव मेंशन्ड समथिंग. So playing sports is fun, but getting fit is not. Yes. Yes. So yes, thank you so much. Thank you so much. So it was great. Thank you very much on behalf of MaxNyan Advisory Private Limited, Doctor. And it was really a pleasure to hear you today. Same here. Thank you very much for the wonderful session. And also on behalf of MaxNyan, I would like to thank all the audiences here, that those are watching us live. So Rajesh ji, Parag Ajmera, Krupa Ajmera, Hinal Shah, all of them have commented. They have shared their comments on the FB live session. So thank you very much for being with us, and keep supporting, keep enjoying the sessions. And next week, of course, we'll be back with a new different guest speaker. So till then, bye-bye, adieu. Good day, and have a nice week. See you. Thank you. Thank you, Doctor. Bye-bye. Thank you so much.